तो सब कुछ होगा, ठीक है, नहीं करो तो नहीं होगा। ओके चलो, एक बंदा बोल रहा है बाय कन्वर्सरी टू द वन मोस्ट अंडरस्टैंड हाउ द कोड वर्क्स। ओके सी यार देखो, हम लोग को इसमें कोड वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं जाना, वी आर गोइंग फॉर अ क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर जॉब होगी, हमें पूरा कोड में नहीं जाना है। कोडिंग काइंड ऑफ हेल्प विल बी टेकन केयर बाय द प्रोवाइडर इटसेल्फ, एडब्ल्यूएस और जीसीपी खुद प्रोवाइड करेगा हमें। ओके गुड, तो व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग हियर। ओके, और उसके लिए पाइथन डेवलपर विल बी देयर, ही विल राइट अ कंप्लीट कोड फॉर अस। ओके नाउ व्हाट आई एम डूइंग इन दिस, आई एम कमिंग हियर। ओके, अब what I'm trying to say in short, coding will be done by the co-pilot. Okay, so you don't have to worry about the code. Okay, एक बंदा पूछ रहा है बट मेनी क्वेश्चन वेयर इंटरव्यू आस्क यू नो पाइथन कोडिंग, व्हाट आंसर टू देम। ओके, नवीन कुमार, ओके नवीन कुमार, योर क्वेश्चन इज गुड गाइस, आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन। ओके, I would like to take this question. Okay, Naveen Kumar is asking, but my question, when the interviewer asks, you are know the Python coding, you have to say, yes. अगर ना बोलोगे तो you will get rejected. Guys, yes, no, are you agree? तुम्हें आंसर तो yes ही देना पड़ेगा. Okay, yes. You can say I am not a developer. I am not a developer. Okay, I am not a developer. I am a cloud and DevOps engineer. मैं cloud और DevOps engineer हूँ. Okay, but we are using Python for automation. Okay, हम लोग Python automation के साथ यूज करते हैं. Okay, can anyone knows कि automation का टूल क्या है? Python के अंदर automation on AWS cloud. What is the tool or what is the utility? What is the module? You have to say कि मैं ये काम करता हूँ. What is that? Fill in the blanks guys. ये बताओ. You have to say this answer. ऑलरेडी एक चैट बॉक्स में आ गया है, अनुज और पूजा ने दे दिया है. सी दिस, यू हैव टू से दिस कि आई एम यूजिंग बोटो 3, POTO बोटो 3. ओके, यू हैव टू से दिस पार्ट कि हम लोग बोटो 3 यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट. अगर किसी को नहीं पता है वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन, तो एक सेकंड पाइथन का आंसर दे देता हूँ, बोटो 3. ओके, जस्ट आई विल शो वन इमेज, मैं एक इमेज दिखाता हूँ, बोटो 3 विथ AWS. ओके, विथ AWS. Okay, and you have to say कि हम लोग ये काम करते हैं. I will show one image. Okay, so that if you see any indication, ये है, जब ऐसे indications हो. Okay, not this one, this one. You can take this one. Okay, Python का कोड रहेगा. With the help of Boto 3, it will go to the AWS. Okay, अब some people will ask, sir, Boto 3 क्या होता है? Because if the point came, I have to give the answer. That's my responsibility. Okay, I'm going to the Boto 3 website. Okay, Boto 3 is a यहाँ पे कहीं लिखा है नहीं, सिंपल लैंग्वेज, आई नीड इट सिंपल. Okay, चलो, AWS SDK Boto 3 is a Amazon Web Service software development kit to make the configuration or managed service. If you want to use the managed service like EC2, S3, RDS, anything, you want to perform the task easily, automations with the Python language on the AWS cloud with the help of AWS, with the help of Boto 3, we can do it. Okay, in short, I will not get the proper definition, but I will say Boto 3 is a library in the Python, okay, which we can use it to interact with the AWS cloud in Python language. अगर हम Python language में हमें AWS cloud से बात करना है, with the help of Boto 3 we can able to do. Understood? Yes, no? Understood? Yes, no? Guys, understood? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? सुमित को समझ में आया? What about others? धनु को समझ में आया, संदीप को समझ में आया, राज को समझ में आया, इमरान खान able to understand, Sanjay Kumar, Praveen, cool. Okay, so I will repeat again. Boto 3 is an integration or utility between AWS Cloud or Python. Okay, if the code is written in Python language, you want to execute on the AWS Cloud with the help of Boto 3, we can able to perform आधा this किलो activity. Cool. 400 का That's डाल दो it. जितना तो. Okay, so first setup is done. This one. Okay, and that's it. Okay, cool. Now I'm coming to the project. Okay, if I will ask you very simple or general question, do you know guys, when you created your very good resume, guys, I hope you have till now you have everyone created a very good resume, सबने अपना resume बहुत अच्छा बनाया है. Yes, no? Yes, no? भाई बनाया ही होगा, क्यों नहीं बनाया होगा? Because that will directly depends on your package. Okay, तुम्हें आंसर देना आता है या नहीं आता, that's a secondary part. Okay, but I hope you have created your very good. सस्ती बोली नहीं बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, आज बन जाएगा. Guys, if you created your best resume, okay, do you know how much time it will take to get select or reject into the automated system? How much time it will take to select or reject? Bolo, bolo, bolo. 5 seconds, 6 seconds, 15 seconds. The correct answer is guys only 3 seconds.
If your resume is very good or very bad, it can be get selected or rejected in just 3 seconds. Okay, so I want you to send some people, not everyone, one or two people, three people, send me your resume to me. I will review your resume right away. एक दो बंदों को सेंड कर ही दिया इमरान खान ने, बिल्कुल वेस्ट लगता है इमरान को. Cool. Imran, I will review your resume. Okay. Not human being. With not human being approach, I will review with the automation approach. Okay. But see, automation, so if the software is already available, then what is the use of cloud or DevOps engineer, right? So you will develop the complete system. भाई सॉफ्टवेयर चलाने का पैसा नहीं मिलता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करके कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके रन करने का पैसा मिलता है. अंडरस्टूड? यस नो? गाइस एग्री? यस नो? We will not get money, we will get not get 20, 30, 40 LPA for running the software. No, to build, to compile, to execute, create on infra, AI integration, then only you will get 20, 30, 40 LPA package. That's why I have invited you, and welcome to the Python, not Python, welcome to the project development session for the next 60 minutes. Okay, next 60 minutes में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा. Okay, before that there are some prerequisites, guys. Okay, to develop this I am telling you the architecture. द आर्किटेक्चर इज इन वेरी सिंपल. हाँ रिज्यूम भेज दिया, ठीक है, पहले तो सिस्टम तो बनेगा तब मैं रिज्यूम चेक करूंगा ना. अभी मेरे को रिज्यूम नहीं चाहिए. ओके, कूल. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पाइथन, इन द पाइथन लैंग्वेज द फुल कोडिंग विल हैपन. ओके, पाइथन के अंदर फुल फ्रंट एंड कोडिंग विल हैपन. फ्रंट एंड मींस द वेब सर्वर रिलेटेड एक्टिविटीज. अंडरस्टूड? Okay, in the Python language the web server related activities will happen. Okay, guys, I really want to talk with lot of people here. Okay, so I will allow everyone to unmute. सब लोग को unmute करने का मौका दे रहा हूँ, but be on the mute. जब कोई question आए raise your hand and talk. Understood? Yes, no? Okay, cool. Now Python is a front end. Okay, second, EC2 machine. What is EC2? Can you give me the answer? Raise your hand, come up on the camera and give me the answer. अमित चौधरी भाई बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आंसर दे दो. यस, माइक क्या, हेडफोन बहुत अच्छा है Elastic तुम्हारा, compute. ठीक है. Yeah, यस, elastic EC2. compute. Elastic compute. अच्छे से बोलो, Forget. इलास्टिक कंप्यूट आगे क्या है? Forget. Yeah. भूल गए. चलो, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. व्हाट डू यू मीन बाय Cloud. Yeah. इलास्टिक? अमित भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. व्हाट इज इलास्टिक? So elastic is a term they are using. AWS is using for everything actually. So I don't know. Yeah, exactly. इलास्टिक मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो कम ज्यादा होता है अपने आप. ओके, उसे इलास्टिक कहते हैं. व्हाटएवर गाइस, व्हाटएवर द सर्विस इन एडब्ल्यूएस जिसके आगे ई है, तो इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. क्या इंक्रीज और डिक्रीज? सेकंड इज कीवर्ड कंप्यूट. Scalability, कंप्यूट मतलब क्या होता है? scalability and all. So increasing the स्केलेबिलिटी इज अनदर कॉन्सेप्ट. अमित भाई स्केलेबिलिटी अलग है, इलास्टिक अलग है. ओके, स्केलेबिलिटी वो अलग है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो अलग पार्ट है. आई एम टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी. वर्कफ्लो सर. ओके, ठीक है, मैं अभी सी की बात कर रहा हूँ. इलास्टिक मींस इंक्रीज डिक्रीज. सी बिलोंग टू कंप्यूट. compute. कंप्यूट मतलब सीपीयू, मेमोरी, डिस्क. ओके, मतलब मशीन का साइज और इंक्रीज विल हैपन. और सेकंड सी का मतलब होता है क्लाउड, ऑन द क्लाउड, मतलब एडब्ल्यूएस के क्लाउड पर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस इन एडब्ल्यूएस. 2006 में आई थी. 2006 में दिस सर्विस हैज बीन लॉन्च, एंड दिस इज वन ऑफ द रिवॉल्यूशन in into the cloud industry. Ki virtual machines are provided virtually to us. Okay, with the help of virtualization technology we are able to use the EC2 machine. सर कोई एग्जांपल है? अरे बहुत है. MSC, ये मेरी एक मशीन है, mac.clouddevops.com. इफ यू विल कम अप हियर, क्या है ये? चलो देखते हैं एक मिनट, लॉन्च हो रही है कि नहीं हो रही. अरे बंद हो गई क्या? चलो आई विल डू इट. एक और होगी मेरे पास. ओके, labs.clouddevops.com. ओके, सब बंद हो गई. वेट, कोई बंद नहीं हुई. कहाँ गए हम? चलो मे बी. ओके, लेट अज्यूम इट इज नॉट एक्सेसिबल एट दिस पॉइंट. कैसे एक बंदा कोई एक्सेस करके देखेगा क्या, वर्किंग है क्या नहीं है? mac.clouddevops.com एक्सेसिबल और नॉट? मेरे को तो नहीं चल रही. व्हाट अबाउट यू? नो? चलो बंद हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग चालू कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज वन ऑफ द वर्चुअल मशीन अवेलेबल फॉर अस एक्सेसिंग वर्चुअली. ये देखो राज बोल रहे हैं वर्किंग है, वर्किंग है. It's हाँ working वर्किंग for है, me as well. वर्किंग है यार, वर्किंग है. हाँ पता नहीं क्या हो रहा है. सिक्योर तो है. चलो एक मिनट ऐसे हटा देता हूँ. पता नहीं, चलो लीव इट मैन, नहीं हो रही, छोड़ो, कोई बात नहीं. ओके, अभी ये टॉपिक नहीं है.
आवर टॉपिक, हाँ वर्किंग है, गुड, ओके, गुड गुड गुड, वर्किंग है, मुझे पता है, ओके, गुड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक मशीन है वर्चुअली अवेलेबल फॉर एवरीवन, ओके। और यहाँ पे ये फ्रंट एंड हो गया, ये फ्रंट एंड वेब सर्वर हो गया, ये इंफ्रा हो गया, ओके। एस्टिमेट एक मिडिलवेयर हो गया है, ओके। व्हाट इज मिडिलवेयर? कोई आंसर देगा? मिडिलवेयर, इमरान भाई बोल दो। So it's the interaction between the two different either the workspace and the machine language, sir. नहीं, चलो ठीक है, हाँ गुड, वेरी गुड इमरान, एक बार फिर से रिपीट करो, बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने, यस, फिर से बोलो। So it's the intermediate you can say inter connected between the machine language and से इसी टू द हार्डवेयर है, करेक्ट। और ये पाइथन वेब एप्लीकेशन एक वेब सर्वर है, तो इन दोनों के बीच में ये वेब एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे चलेगी? बिकॉज मिडिलवेयर होगा, वो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर होगा, वही हेल्प करेगा। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड दिस पार्ट? ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर